Let's start the introduction of the chapter, The Bond of Love by Kenneth Anderson. First, let me tell you something about Kenneth Anderson. He was born on 8th March 1910 and died on 30th August 1974. He was an India-born British writer, and he wrote about his adventures in the jungles of South India. Means he was born and brought up in India, and he was more engaged in adventurous activities in the jungle area of South or the South India. Now here in this chapter, the Bond of Love chapter throws a light on very special and intimate issue of human and animals' life. Both animals and human beings understand love and affection. And in fact, animals' love is always real in nature, without any selfish agenda. Animals are much better than human, and the same is being proved in this chapter, The Bond of Love. Love is a common feeling in men and animals. Animals also feel pangs of separation as of humans. They also feel too much when they are being separated from their beloved or the person whom they love, or even to a place where they are being shifted away to the place where they are staying. Now here is the story where the Kenneth Anderson, the writer, tries to establish one connectivity or a chord of understanding between an animal and a human being. Here his wife is there, who was very close to one bear whose name was Bruno. And let's find out what is there in the story. There is a interesting story ahead of you. Let's just go into the story. What's this story? Especially what the story is all about. Once the author, Kenneth Anderson, was passing through the sugarcane fields near Mysore. Mysore is in South India. So the people were chasing away or the driving out the pigs, wild boars from their sugarcane fields because they damaged the field too much. And while doing that one, they are shooting them even. While during that process they were passing, one bear just rushed out of the field, and one of the companion or the friend of author shot at the bear, especially a sloth bear, and he was down there. Down means he gunned down that bear. But after some time they noticed that something which is quite sloth in nature or a very furry type thing had just been went away from the bear, and that was steady there and that was weeping. Then they found it is the cub of a bear, baby bear. So the author took him and put in the gunny bag, and they came to the house. They came back to the Bangalore, and this author was staying in Bangalore. So he presented the cub to his wife, and she was quite delighted. It was a male cub, and she named it Bruno. And Bruno was now drinking. He started drinking milk from a bottle, and in fact he started to eat everything and eat and drink, in fact, everything. And there were two Alsatian dogs also in the house of the author. Then he was having tenants, but he was quite friendly with them, and they were having a quite good bondage with this Bruno. And he used to play with them, and he would go to sleep in the bed of the family also. Means he used to go on the same bed where the family was sleeping when he was a child. So the time passed, and one day one accident happened that he had some barium carbonate which was being kept in the library. He drank that one, and that was a poison to kill the rats, and he got paralyzed. He was not being able to stand on his feet, so he was being taken to a veterinary doctor, and he was being given antidote by the doctor. And this time he was being able to just stand up with quite difficulty. But the next time he drank 1 gallon of engine oil, but this time there was no problem to him. Now,
After some months, Bruno gained much in size and height. Means he gained too much. He became too much healthy and quite grown up. So his name was being changed from Bruno to Baba. Baba means a small boy. And the wife of the author used to love him very much. Then Baba was able to do certain tricks. When you give him a command, Baba wrestle. Wrestle means be ready for the kushti. Then he used to come into the pose. Or you say, Baba, hold gun. He used to just hold the gun of one stick. Baba, where is baby? Likewise, if you give certain commands, he used to follow those one with certain articles of the home. Then Baba was quite grown up. He had to be kept changed most of the time. Lastly, it was being thought that they should leave him to the Jew of Mysore. So they sent the intimation, and a case came from there, and he was being sent on a lorry to the Jew at Mysore. Then everyone missed Baba greatly at the home, including the author's wife. She was not eating anything and she was continuously weeping. Okay, she wrote many letters to the Jew, and even she used to request to everyone who was going to Mysore to just see Baba. And everyone reported that Baba is well. Of course, he is sad and thin. So one day the wife of the author said that I must go and see him after 3 months or so. She said, I must go there and see him. Then she went there, and everybody was thinking that Baba would not recognize her, but he at once recognized her and howled with great happiness. And he stood on his feet in delight. Head. Means he just overturned himself, and he was quite delighted. But at the closing time, she was being separated from him, so that at that time she was weeping bitterly, and Baba also cried bitterly. So the writer's wife asked the curator, or the supreme the chief there, that you can, if you can just give it back Baba to us. Then he said, okay, I don't have this authority with me. You just write to the superintendent at Bangalore, and if he could grant your permission, definitely you can take it to the home. So they requested that one, and lastly their request was being considered, and he was being given back to them. So there was one island was being made for the Baba. Means a special place in the courtyard, back courtyard was being made, that was 20 feet into 15 feet and deep, or you can say 7 feet deep and 6 feet wide. A deep, you can say, what trench type was being made, a pit was being made so that he should not come out, and he was being placed in a box on that island. So the straw was also being placed inside to keep him warm, and author's wife used to spend many hours there. She used to sit on the chair, and the Baba sat on her lap. Now there was some special procedure by which the writer tells us how his wife used to reach the island. There was a branch of a mango tree hanging above the pit. The writer tried to rope it to the branch with a loop at the end, and with one foot in the loop, and she would kick off the other. Thus she used to reach the other side of that one, and in the same way she used to come back. Now at the last, the writer says that the bear has much affection and memory as a human being has. Means there is a special bondage between two creatures, that is one human and the second one is animal, but they have a great understanding towards each other, where it has been told to you that love is a very common thing, which even animal understand it better than of humans. Humans can deceive to anyone, but definitely animals don't deceive. Same is being projected in this chapter, that a bear
or who was being brought up there in the house of the authors by by his wife, he just was so intimate to her wife, to his wife, that he was at last so well connected. That is really praiseworthy, which is being reflected in the chapter. Even though animals have a better understanding than humans, which is also being just shown in the chapter, they are real in nature. Their love is real. They don't just pretend in anything, which is being just shown in the chapter to you. So this is a story on the bondage of a human being and a animal. This is a correlative study of both, you can say. So now let me just tell you something in Hindi also about this one. वास्तव में ये बॉन्ड ऑफ लव आपका 9th चैप्टर प्रोज से है, और इसको केनेथ एंडरसन ने लिखा, जो भारत में पैदा हुआ एक ब्रिटिश राइटर था। मीन्स उसका भारत में पालन पोषण हुआ और वो बड़ा हुआ, और वो दक्षिण भारत के जंगलों के अंदर उसके काफ़ी सारे जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ थी उनके चैप्टर्स के बारे में लिखा गया है। वो दक्षिण भारत में रहा और जंगलों में ज़्यादा घूमता था। उनके जो एडवेंचर्स थे, उसके जोखिम भरे कारनामे थे, उनके ऊपर कई उसने लेख लिखे, या ये उसका मुख्य पेशा था। यहाँ पे एक पशु के बीच में और एक आदमी के बीच में काफ़ी गहरा प्यार, या उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग को दिखाया गया है कि किस तरह से एक भालू भी आदमी से प्यार करता है। वास्तव में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा सच्चे होते हैं, वो ज़्यादा सच्चाई से प्यार करते हैं, वो आदमियों की तरह से नहीं होते। दे डोंट प्रिटेंड, वो कोई बहानाबाजी या इस टाइप से जो है कोई नकलीपन नहीं करते। दे आर नॉट हिपोक्रेटिक इन नेचर। तो यहाँ पर एक कहानी है छोटी सी कि किस तरह से ऑथर एक बार एक शुगर केन फील्ड्स के अंदर से, गन्ने के खेतों के अंदर के वहाँ से गुजर रहा था। ये मैसूर की बात है, अपने दोस्त के साथ। तो लोग वहाँ से गन्ने के खेतों से वाइल्ड बोर्स को भगा रहे थे, जंगली सूअरों को, तो वहाँ या पशुओं को भगा रहे थे, और वो यहाँ तक कर रहे थे कि उनके ऊपर बंदूक से गोलियाँ भी चला रहे थे ताकि वो डर से भाग जाएं या मर जाएं, क्योंकि वो गन्ने के खेत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे। तो इसी प्रोसेस में जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो सामने एक भालू आया, तो इसके दोस्त ने खटाक से जो है अपनी बंदूक तानी और उसको मार दिया। परंतु थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि इसके ऊपर से कोई एक चीज़ बालों वाली अलग हुई है। तो जब उन्होंने जाके उसको उठाया तो वो काफ़ी ज़ोर से रोया, और वो उस भालू का बच्चा था, जिसको लेखक अपने घर पे आ गया और अपनी वाइफ को उसने गिफ्ट कर दिया। उसका नाम ब्रूनो रखा। थोड़े दिन के बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसका नाम बाबा रख दिया गया। बाबा का मतलब है कि जो है बच्चा, यूँ कैसे एक छोटा बच्चा। तो ये लेखक बैंगलोर में रहता था और उसको वो बैंगलोर में लेके आ गया। अब ये हर एक चीज़ को पीने लगा, दूध को भी पीने लगा, हर एक टाइप का कोई भी तरल पदार्थ हो उसको पी जाता था। और ऐसे ही खाने की चीज़ों में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सब्जी हो, रोटी हो, कुछ भी हो, ये उसी को खा जाता था। फिर एक दिन एक बड़ी दिक्कत हुई, एक एक्सीडेंट हुआ कि लेखक ने अपनी लाइब्रेरी के अंदर एक बेरियम कार्बोनेट करके एक विषैला पदार्थ जो चूहों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है वो रखा हुआ था। वो उसने ठा के वो खा लिया, और उससे वो पहले तो वो बेहोश हो गया, और बाद में जो है उसको अधरंग अपंगता आ गई, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पाया। उसको एक पशुओं के डॉक्टर के पास लेके जाया गया। वहाँ उसने उसको कुछ प्रतिरोधक दवाइयाँ दी और वो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। फिर थोड़े दिन बाद उसने जो है 1 गैलन के करीब पुराना इंजन ऑयल रखा हुआ था, उस इंजन ऑयल को उसने पी लिया, परंतु अब की बार उसको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो जब काफ़ी मीन्स दिन बीतते गए, महीने बीते, तो अच्छा मोटा ताज़ा होगा, वो भारी भरकम हो गया शरीर में। अब उसको घर में रखना जो है मुश्किल हो गया। उसका नाम ब्रूनो से अब बाबा रख दिया गया। बाबा का मतलब छोटा लड़का। और वो कुछ अजीब टाइप की हरकतें भी करता था। अगर आप उसको बोलोगे कि कुश्ती करिए तो वो कुश्ती के मोड में आ जाता था। उसको बोला जाता था कि होल्ड गन, अपनी बंदूक पकड़िए, तो वो कोई भी स्टिक उठाता और उसको गन की तरह से होल्ड करता। या जो है उसको बोलिए कि
बाबा वेयर इज़ बेबी, बेबी कहाँ है, तो वो किसी एक स्टिक को लेकर के उसको सेम टाइप का एक्शन करेगा। अब बाबा काफ़ी बड़ा हो गया था और उसको हर वक्त चेन से बांध के रखना पड़ता था, और सब ने फिर ये निर्णय किया कि इसको मैसूर के जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर छोड़ दिया जाए। उसके लिए वहाँ पे लिखा गया और वहाँ से एक पिंजरा आया, गाड़ी में लाद करके उसको भेज दिया गया। अब उसके जाने के बाद बड़ी दिक्कत खड़ी हुई। लेखक की जो पत्नी थी उसको बड़ा ही अब वो ना खाती थी, हमेशा रोती रहती थी और काफ़ी उदास रहती थी। जो भी कोई मैसूर की तरफ जाता, वो उससे पूछती कि आप वहाँ जाइए और उसका पता लगाइए, तो सब यही कहते वो ठीक है परंतु थोड़ा सा उदास रहता है। और उसने काफ़ी पत्र भी लिखे। 3 महीने बाद वो अपने पति को बोलती है कि अब मुझे उसको एक बार देख के आना है, अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो मैं बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। जब वो सब ये विश्वास कर रहे थे कि उसको बाबा पहचानेगा नहीं, परंतु जब वो वहाँ पे गई तो उसने देखा कि एकदम से बाबा उसको पहचान गया और बहुत खुशी के मारे वो गुर्राया और वो सिर के बल उल्टा खड़ा हो गया। परंतु जैसे ही शाम का क्लोजिंग टाइम आया जू का बंद होने का, तो लेखक की पत्नी को उससे बिछड़ना पड़ा। वो भी रोई और वो भी, भालू भी बहुत तेज़ी से रोने लगा। फिर राइटर की पत्नी क्यूरेटर को बोलती है कि क्या हमें ये वापस मिल सकता है। उसने बोला कि हाँ आपको मिल सकता है, परंतु मेरी अथॉरिटी नहीं है। आप सुपरिंटेंडेंट जो बेंगलोर में बैठते हैं उसको लिखिए, वहाँ एक परमिशन डालिए, आपको मिल जाएगा। तो वो अग्री हो गई सुपरिंटेंडेंट, और आखिरी में जो है उसको एक पिंजरे के उनको दे दिया गया और लॉरी के ऊपर वो लेके आ गए। अब उसको रखने की बड़ी समस्या थी। अब उसके लिए एक द्वीप टाइप जो घर के पिछवाड़े में जो खाली जगह थी वहाँ पे बनाया गया, एक 20 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी, और फिर उसके बगल में 6 फीट चौड़ी फिर एक वोरवो और 7 फीट गहरी एक खाई खोदी गई, और उसके बीच में उसका पिंजरा और वो रखा गया, और वहाँ पे उसको भालू को रखा गया। अब इसकी पत्नी उससे मिलने के लिए जाती थी तो वो अपनी चेयर पे बैठती और वो उसकी गोद में बैठता, और इस तरह से एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों के बीच में। अब लेखक बताता है कि वहाँ जाने का क्या प्रोसीजर था। उधर उस 6 फीट जो चौड़ी वो खाई थी उसको कैसे क्रॉस किया जाता था। एक आम का पेड़ था, उसकी एक टहनी ऊपर आई हुई थी, एक टहनी नहीं यूँ कहिए कि बड़ी सी एक ब्रांच थी, उसके ऊपर जो है एक बड़ा सा रस्सा बांधा गया, और उस रस्से के निचले साइड में एक लूप दी गई जिसमें लेखक की पत्नी अपना एक पैर उसमें लगाती और दूसरे पैर से जोर से धक्का देती, जिसकी वजह से जो है वो दूसरे पार चली जाती और इसी तरह से वो वापस आ जाती। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर में दिखाया गया है कि किस तरह से भालू वो भी बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं आदमियों से, और उनके अंदर बहुत अच्छी मेमोरी होती है आदमियों की अपेक्षाकृत। तो इस चैप्टर में एक तरह से ये दिखाया गया है कि किस तरह से पशु भी आदमियों से प्यार करते हैं और उनका प्यार बहुत ही सच्चा होता है, और एक स्टोरी के माध्यम से ये आपके सामने रिफ्लेक्ट किया गया है। द बॉन्ड ऑफ लव बाय केनेथ एंडरसन। ही वॉज ए ब्रिटिश, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। तो ये एक साउथ इंडिया के जंगलों के अंदर उसकी एक एडवेंचरस एक्टिविटी थी, जहाँ से वो जो है इस भालू को पकड़ के लेके आया था। So we'll go on to the interpretation of this story also.